For formal introduction, I'd like to invite Shikha Urmil. Yes, sir. Good afternoon, everyone. This is Shikha Urmil, and I am here to introduce our esteemed resource person, Dr. Ram Kumar Pathak. Dr. Pathak is a retired senior system analyst, computer science at Dr. Hari Singh Gaur Central University, and he is also a freelancer, academics and administrative activities in Siddhi Triveni Academic Group, Sagar. In academic credentials, he has done his MCA from C.V. Raman University, his MPhil from Madurai Kamraj University, Madurai, his PhD in management from Faculty of Management Studies, Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar MP, his MPA in public administration from Dr. Hari Singh Gaur University, his MSc in maths from RD University, Jabalpur, and BSc in maths from Sagar University. He's a visiting faculty and resource person at various educational institutions such as Computer Society of India, Jabalpur, Prestige Institute of Management and Research, Indore, Infinity Management and Engineering College, Sagar, Eklavya University, Sagar, SAM Global University, Bhopal, Symbiosis University, Indore, Gyan Ganga Institute of Technology, Jabalpur, School of Management Studies, Motilal Nehru Institute of Technology, Allahabad, Jawaharlal Nehru Police Academy, Sagar, Department of Computer Science, RD University, Jabalpur, CR Institute of Management, Barkatullah University, Bhopal, Department of Computer Science, APS University, Rewa, HRDC, RD University, Jabalpur, HRDC, Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar. He has published more than 23 national research papers and 3 international research papers. He has done 500 plus projects and dissertations. He is the student coordinator of Computer Science Society, Bombay. He is an expert member of several technical and academic committees in the universities and of various other organizations. Dr. Pathak served underprivileged through Rotary International District 3040 as President, Assistant Governor, GML Editor, IYE Leader, and Chairman of various committees. He has also organized several health checkup camps, polio corrective surgery camps, blood donation, eye checkup camps, etc. He is a life member of Computer Society of India, life member of Indian Science Congress, Rotary International District 3040, executive member Alumni Association, Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar. So here we welcome Dr. Pathak. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Ma'am, this was not needed. My only introduction is that I am an alumni of FMS Sagar, and I belong to Sagar. I started my career in Sagar. So that's only my introduction. This was not needed for me. Okay. Anyways, good afternoon to all the participants. My voice is clear to you all? Yes, sir. Yes, Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. So, very good afternoon to all the participants. I am very much thankful to the Yaswant sir, Professor Yashan Thakur, who is the mentor also and the guide of my PhD, that he has given me the opportunity. Thanks to the Uike sir that he chose my name. Dear participants, they have given me this, and though I am a man of computer science and I am involved in that only, but they have given me the opportunity to speak on this topic. So let's see. We'll start today's session. And before starting my session, once again, I am sorry that somehow I was in impression that my classes session is from 2:30. So I could not join you on time. But anyways, now we are starting. Before starting the session, I would like to share my screen. So please give me 1 minute only, and then we'll start our session. Can you see my screen? All the participants, can you see my screen? Yes, sir. Yeah. It's my humble request to you all, please be interactive, because that's the drawback of the Google Meet, that once we start the sharing my full screen to you,
I won't be able to see how many of you are connected in the class. So in between, if we'll be having some kind of the interaction, would be very much helpful for me. So, dear participants, myself, Dr. Ramkumar Pathak, I am a retired person. And the today's topic which they have given me, that is the integration of solar energy with the agriculture. How we can incorporate, we can club, integrate in mathematics term, the two technologies, how we can club with each other to get the better results. And that is the topic, integration of solar energy with the agriculture. My today's session will be in the 4-part. First, we'll have some introduction. Then the second session, second part, we'll have solar energy in the agriculture, the challenges of integrating the solar energy with India's agriculture sector, and then future ahead. This will have the complete presentation. So let's start with the introduction. As my in this slide only, this 3 sun rays are 3 चीजें आपको दिख रही हैं. The one this shows the when the sun is grooming. जब आप sun है तब आपके पास में better crop है. So that is the symbol of the today's lecture. Dear participants, as you know that India's economy is based on the agriculture, and total the economy India since from the beginning we are based on the agriculture only. On that basis, the Honorable Lal Bahadur Shastri, Prime Minister, the then Prime Minister, gave a slogan that Jai Jawan and Jai Kisan. Later on, the Atal Bihari added something to it. Respected Honorable Atal Bihari ji added to this, that is the Jai Vigyan. So the slogan became the Jai Jawan, Jai Kisan and Jai Vigyan. Means how to incorporate the science to get the better result. But later on, the current Prime Minister, Honorable Modi ji, he added one more thing in that, that is the how to add the Jai Anusandhan to get the better crop, better results from the agriculture, so that we can strengthen the India's economy. So that is actually the today's topic, that how to incorporate the Jai Jawan and Jai Kisan with Vigyan and Anusandhan. How we can incorporate the new technologies, new techniques in getting the better result in agriculture. And that's why he quoted in one of the conference that a green future, net zero are not just the fancy words, but they reflects the India's need and the commitment, making it the best destination for investment. How to invite the peoples to invest in India and rural areas and the root areas of the country. So this was the basic purpose. Here the net zero means the Harit in Hindi, if you call it Harit Bhavishya, शुद्ध शून्य, मतलब कि where the carbon जो है वो इस तरह से बैलेंस में निकले कि किसी तरह का कोई हार्म हमारी ग्रीन उसको ना हो, एनवायरमेंट को ना हो. On that basis, the current India's vision is based on SWNH, that is the solar, wind, nuclear and hydropower. The vision is to build the future on the basis of the solar, wind, nuclear and hydropower, turning the green transition into the people's movement. How we can incorporate all these things, how we can use them for the betterment of the future, the country. Just a decade ago, कुछ साल पहले तक, India was landscape, India's solar landscape wasn't just infancy. बहुत खराब हाल, उतना अच्छा नहीं था. But now the scenario in last 2 decades, the scenario has completely changed. The India ranked 4th global in renewable energy installed capacity and 4th in the wind power. And surprisingly, the India is 3rd in solar power capacity as per the data of IRNA, the Renewable Energy Statistics 2025. The India weighed 108,494 gigawatt hour of solar power
more than the Japan's 96,459 gigawatt hours and became the world's third biggest solar energy producer. So now the India is the third biggest solar energy producer. That means you can understand how much we have make a growth in the agriculture sector in last the 2-3 decades. The India solar module manufacturing capacity jumped from 38 gigawatt to 74 gigawatt during the 24-25 only, as per the records. As far as the renewables now make up 50.07% part in the total capacity of 484.82 gigawatts, which is we have achieved 5 years before the 2030, which was the target as per the target which was fixed in the COP26. The COP26 is what? That is the 26th Conference of Parties, which was held in UN Climate Change Conference in Glasgow, in where approximately 120 leaders participated and 40,000 registered. Please switch off the mic. Whose mic is on? I would request the participants to please switch off your mic. Who is this? Please check the organizer. Hello. दीदी तो Whose फर्स्ट mic है मेरे is पास on? सेकंड के पास VK sir. क्या करना है अच्छा VK sir, please switch off the. Ask the participant to switch off the mic. Hello. Hello. 35 ही लिखवाएं। Anyways, so you all are there in the class now, participants? Yes, sir. Yes, sir. So in one of the editorial, which was the solar energy for Amrit Kal in agriculture, was published in 22 by Indian Express, which talks about the wonders potential of solar energy in India's agriculture sector. But the basic reason why we are expecting so much from the solar energy, the use of solar energy in agriculture, because we are fortunate that the India lies in the tropical region with the Tropic of Cancer passing through 8 states. The Tropic of Cancer are almost dividing the countries in 2 parts, and it's going through the center of India, which you can see in the graph itself. The Tropic of Cancer is passing from the 8 states. These are the 8 states: Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Tripura, Mizoram, West Bengal, Jharkhand, and Chhattisgarh. That's why there are the solar energy can be game changer for the agricultural sector in India. This can save the precious water resources, reducing the dependency on the grid electricity, and even becoming an additional revenue stream for the farmers. This is the another graph which shows how much the solar energy we can collect from the solar system. This is the annual mean daily global radiation in India. That is the kilowatt hour per square meter per day. So you can very easily find out that almost of all the India, we are getting a very good amount of the solar energy from the solar system. The India has set a target. Looking to that, the India has set a target for 2030 to increase the country's share of non-fossil based installed electric capacity to 40%.
the India has playing a leadership role in encouraging the establishment of solar-based economy across the globe. And that's where the India, with the partnership of the friends, promoted the to establishment of the International Solar Alliance, that is ISA, in 2015, which is having a headquarter in India. And due to that only, because we are getting very good solar energy, and in last 2 decades we have increased our solar production. So the resultantly, the Ayodhya, which is the birthplace of the Lord Ram, is said to become the country's first solar city in India. And in next, including the 17 other cities are also proposed to become the complete solar cities. The Uttar Pradesh government has planned to develop all 17 of its municipal corporation as a solar cities, promoting the renewable energy uses, solar plants, street light, water heaters to cut the cost and emission, aligning with the national net zero goal to fulfill this target. As I told you that as per the data, we are producing this much of energy, and in comparison to the Japan, and the total India's cumulative solar power capacity stood 119.02 gigawatt as July 2025. Out of this 119.02, the 90.99 gigawatt from the ground mounted solar plants, मतलब 119.02 गीगावाट जो टोटल हम सोलर एनर्जी हमारे पास में प्रोड्यूस हो रही है, उसमें से ग्राउंड माउंटेड सोलर सिस्टम प्लांट से हम 90.99 ले रहे हैं. From the grid connected rooftop systems, we are getting 19.88 and 3.06 gigawatts from the hybrid projects and 5.09 gigawatts from the off-grid solar installation. I think it must be clear to you what is an on-grid and off-grid system. आप लोगों को मालूम है ना on-grid और off-grid system क्या है? Yes, sir. Yeah. So this picture shows the on-grid solar system, and this graph shows the off-grid solar system. As part of the pledge made in COP26, which is the United Nations Climate Change Conference held in Glasgow, UK in 2021, aiming the global net zero by mid of this century. Efforts are being directed towards reaching the 500 gigawatts of non-social fuel electricity capacity by 2030. As per the data, there is a record surge in the India's solar capacity. And from 4 major reasons, we are getting a sufficient solar energy, that is the 748 gigawatts. And those reasons are the northern western region, southern central region, eastern and other region. The states are covered by these regions as shown in this graph. This presentation I am going to share with you so you can record it. In July 2025, the India's solar power capacity has increased by 4,000%, and the country's total renewable energy RE capacity reached to 227. The village of Jammu Kashmir, in last 1 decade only, the Bali village of Jammu and Kashmir became the India's first carbon natural panchayat by running entirely on the solar power. That means you can understand how much we are expecting from this implementation of the solar energy in India. The government has transformed the various initiatives, and they announced different schemes to promote the solar energy in country. The PM Kusum scheme, the wind solar policy, the PM Kusum scheme, which provides the financial support to promote the solar energy amongst the farmer. Whereas the wind solar policy establishes a framework for hybrid and wind solar energy, where the Atal Jyoti Yojana illuminates the dark regions with the solar street lights. The International Alliance collaborates globally to deploy the solar solution against the climate change.
on one sun, one grid system aims to connect the regional grids to the unified solar network. We'll go through it. One sun, one earth, one grid. तो वो अभी अपन आगे चल के देखेंगे क्या है that the concept is. The other schemes of the government of India to support the solar energy are the PM Surya Graha Yojana, PM Kusum Yojana, Kusum, where the Kusum stands for the Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan, the Solar Park Scheme, the PM Janman empowering the PVTG. PVTG means the particularly vulnerable tribal groups of the communities through the solar electrification. The increase of PV means the cells, those are used to generate the solar energy. The government is planning to support the manufacturing, to increase the manufacturing capacities of the PV cells. The floating solar projects, where the Madhya Pradesh is fortunate enough that we are having the Asia's largest floating solar park, that is in the Omkareshwar, and which is producing 600 megawatts of the solar energy. The agrovioletics uses the solar panels, because this was the biggest problem, that when you implement the solar panels in the field, that field you can't use. But in this scheme, the agrovioletics uses the solar panels and allow farming underneath to increase the land use of the farmer's income. That is the below the solar panels. These are all the different schemes, and apart from these schemes, there are various state-wise schemes, region-wise schemes, zone-wise schemes are also launched by the government of India and the state governments. Now, these are the benefits, but what are the advantages out of it? If you implement if you integrate the solar energy with irrigation and agriculture. What is the difference between irrigation and agriculture? Is that clear? Irrigation and agriculture both are the same or somewhat different? Participants? No, sir, they are different. What's the difference between the irrigation and agriculture? This is normally the people doesn't understand it. So irrigation, there is a difference between truly the irrigation and agriculture, they both are the different. So what's the difference in that? Agriculture is we sow seeds and we get a plant and then we get the harvest. Mm-hmm. And irrigation is we provide water to this fields. I guess. Anyone else? Yeah, partially you are correct. The agriculture is a generalized term. Irrigation for a particular crop, when you implement some technology to increase the production of the particular crop, that is the irrigation, that we call it the irrigation. So there are several advantages in using the solar energy in irrigation. The first, the solar energy, integration of the solar energy saves Sir, you're muted. Sir? Sir? Hello, sir? Am I audible now? Yes, sir. So it's the integration of the solar energy is very cost saving. They means the power integration, irrigation pumps, like the pumps जो है electricity का बहुत बड़ा part farmers के ऊपर जो एक burden होता है, जो farmers हमेशा demand करते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वेव कर दीजिए, बहुत सारे एजिटेशंस होते हैं, तो वो हम काफ़ी कम जो है कॉस्ट जो है वो कट कर सकते हैं. द सेकंड, इंक्रीज वाटर एफिशिएंसी. सोलर पावर्ड इरिगेशन सिस्टम सच एज ड्रिप इरिगेशन can deliver the precise amount of water directly to the roots of crop, reducing the water waste. अभी आगे चल के अपन देखेंगे how the new technologies are helping out
to save the water in drip irrigation. मतलब कि हम नई टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को कैसे यूज करके किस क्रॉप में कितना पानी देना है, कितनी देर तक देना है, कब देना है, वो सारा हम कंट्रोल कर सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि आप पानी छोड़ दें खेत में और वो जा रहा है पानी. सो दैट यू कैन कंट्रोल यूजिंग the solar energy. The remote and off-grid use. The solar energy can be used to power the irrigation system in remote or off-grid location where the excess of electricity is limited or non-existent. बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं कि गांव में लाइट नहीं है तो हमारी क्रॉप जो है वो इफेक्ट कर रही है. तो अगर हम सोलार एनर्जी को इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा इशू हम सॉल्व कर सकते हैं. Environmental benefits, that is the zero net, we can achieve only using the solar systems in the society. The using the solar energy for irrigation can help to reduce the greenhouse gas emissions. किस तरह से हम AI को और स्मार्ट ग्रीन हाउसेस कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल ट्रेडिशनल ग्रीन हाउसेस को हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी अपन आगे स्लाइड में देखेंगे. द रिलायबिलिटी uses the during the cloudy and night time hours, even in the night time hours and during the cloudy period, we can get the help of this solar system. Solar system can be designed to be reliable as they are not affected by power outage. The scalability. For the scalability, we are now the government and the scientists are working. They are working to implement the efficient energy management system, that is the EMS we call it. The peoples of the management can work on it. EMS system, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम. रिसर्च में आप लोग अगर सभी लोग जो हैं वो अगर टीचिंग फ्रेटर्निटी से हैं तो वो लोग, ये एक नया रिसर्च का एरिया है जहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. दे कैन वर्क ऑन द एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम. द सोलर एनर्जी सिस्टम्स कैन बी स्केल्ड अप and down depending on the size and need of the farm, making the flexible solution. Hence, if we use the solar system in irrigation, we can get the effective crop, sustainable, cost-effective way to improve the crop yield, reduce the water uses, and can promote the sustainable farming practices. This is the new. Now the traditional greenhouse system has been changed. इसके ऊपर आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, नहीं तो अपन इसके ऊपर भी बात कर सकते थे कि now the greenhouses are controlled by the smart energy management system, where some new technologies are implemented to use the smart houses, the smart lights, air sensors and soil sensors, how we can implement them and how we can implement all those things and can control those from the home itself, from the remote area. मतलब एक फार्मर यहाँ शहर में भी बैठ करके वो अपने ग्रीन हाउस की सारे जो उसका प्रोटेक्शन कर सकता है और उसके टेम्परेचर्स को, हीट को, पंप्स को, सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर सकता है. नाउ द ग्रीन हाउसेस आर working are implemented on the basis of the smart energy management system by using the renewable energy resources. So the greenhouses concept has been now changing from the traditional greenhouse to the smart greenhouse. There is a drastic paradigm shift from the traditional greenhouse system to the smart greenhouse systems. Now, the solar, how to where we can utilize the solar energy in agriculture, अपन ये इसके ऊपर अपन बात करेंगे. So the solar energy can be used for the pumping system. There are two kinds of the pump, submersible pump and the surface pump. In both we can utilize the solar energy. The solar pumps can be useful as water lifting device in irrigation canal, also to evenly distribute the water in those areas where traditional water could not have access, such as elevated hilly lands. We can control the flow of the water
utilizing the solar system and implementing the solar system in the traditional pumping system. So in both, whether it is a submersible pump system or the surface pump system, in both we can utilize this the solar energy. ग्रीन हाउस के ऊपर अपन ने बात कर ली. The another one, very effectively the peoples are utilizing the camera surveillance, CCTV के थ्रू पूरी टोटल क्रॉप को कंट्रोल कर रहे हैं, from the pests, from the diseases, from intruders. बहुत सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल रख पा रहे हैं. From the remote area they can find out, they can save, they can protect their land from their own house, from hundreds of kilometers even they can work on it. So these system offers, ये जो CCTV हैं ये सभी दिन में और रात में दोनों समय प्रोटेक्शन करते हैं. These systems offer the features like night vision, motion detection, real-time alerts to smartphones, improving security, productivity, while allowing the farmers to detect the pests, diseases and intruders instantly. ये सारी चीजें वो बड़े आराम से देख सकते हैं by easily implementing a solar based CCTV camera. ये बड़े आसानी से एक पोल के ऊपर आप एक सोलर सिस्टम, ये प्लेट आप लगा दीजिए सोलर की, और उसके बाद में 360 घूमने वाला एक ये कैमरा लगा दीजिए. Now the cameras are very powerful. Even in night also they can give you very good FDH और HD, FHD and HD impression भी आपको दे सकते हैं. तो आप आसानी से देख सकते हैं कि अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. किसानों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है. The solar system, the peoples are utilizing the solar system in different types of the solar dryers. They are using the solar system for the dryer also. They are drying the potatoes, like grains, like the products like potatoes, grains, carrots and mushroom and so on, different kinds of. So this kind of the infrastructure they can develop where they can put n number of the trays, and those trays can be utilized to protect, to dry the crop. There's some technical problem. My monitor is giving some problem. Just a minute. Just a moment. Am I audible? Yes, sir. The solar spraying, you can see my screen now. The solar sprays, we can utilize the solar plates while you are the farmer is spraying the pesticides. वो अपने pesticides को pumping ना करके, the pumping can be done through the solar plates. इस तरह से solar plate को implement कर सकते हैं, and they can utilize the solar system for the pesticides spray. The most pesticides spraying activity are done in the daytime, and hence these spray machines could be used by directly capturing the solar energy, and the farmers can take the help of all these instruments in the agriculture. The solar powered tractors are producing the carbon dioxide during the utilization, and they are consuming enormous oil and to run the tractors in the field. And these tractors can be we can run through the solar system even in the night also, daytime and night also we can, because when you are utilizing these plates, you can store the energy in your batteries so that you can utilize the tractors through the solar energy in daytime and even in the night time also. So these tractors can save lots of money, lots of fuel, and the production, reduce the production of carbon dioxide in the
environment. The solar power treatment, the water treatment can be done using the machines can be operated using the solar power, and reverse osmosis and ultraviolet disinfection system can be established very easily in the field. अभी अपन देखेंगे how we can utilize the sea water even by implementing the technology in your field even. So in coastal areas they आगे आने वाले समय में वहाँ पानी की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि they can utilize that system to utilize the sea water even. The solar powered sensor and control system. These solar power sensor and control system informs the decisions about the water uses, soil moisture level, crop growth, weather conditions. ये सारी चीजें they can implement. These are the some instruments, यहाँ पर ग्राफ में क्लियर नहीं है. These instruments can be implemented installed in the field so that we can control the moisture level, we can observe the crop growth, we can observe the weather conditions through these devices. Those are operated by the solar system. The solar powered desalination. Solar energy can be used to power the desalination system, which can convert the sea water, जिसको हम अभी आपसे बात कर रहे थे, the desalination system, to get the sea water as the fresh water for the irrigation. So in a different way, you can utilize the solar energy to implement in your system. Now this desalination, ये किस तरह से लोग इसको कर रहे हैं, एक छोटा से वीडियो के द्वारा हम आपको दिखाना चाहते हैं कि how the people are utilizing it. So just 2 minutes video. It's not only the water we drink. Water is part of everything we do, yet it's increasingly becoming scarce. Already, 4 billion people face water scarcity today. Islands and coastal areas in particular are at the forefront of climate change. Droughts happen more frequently, and water sources are drying up. The key to unlocking more fresh water lies in the sea. The process of desalination is an expensive exercise, as much energy is needed and energy rates are high. We thought, why not use the elements in our favor? Plenty of sunshine, an abundance of seawater, but not a drop to drink. Combining the power of the sea and the sun, Elemental Water Makers enables reliable access to clean water from unlimited resources. Solar-powered desalination provides independence and resilience. Let's take a look at how it works. Access to seawater or brackish water is arranged through a well or an open intake. The larger particles in the water are first captured using pre-filtration. Then desalination takes place using reverse osmosis membranes. The fresh water can be remineralized for drinking water purposes. It's temporarily stored in the reservoir, ready to be used at will. An inline filter is included before the point of use to ensure the water's quality. All the required energy comes from the sun. The amount of energy we need is reduced by 75% using energy recovery technology. This technology uses the residual energy of the saltier water leaving the reverse osmosis membranes. This means we can do with 4 times less solar panels. To cope with the fluctuations of the sun by passing clouds, a minimum amount of batteries is used. They are maintenance-free and suitable for warm tropical climates. Before shutting down at night and during longer standstills, the membranes are automatically flushed with fresh water to avoid frequent replacement. The solution comes as a hybrid, so it's possible to double the water production at night by grid or a generator. The units are ideal for remote applications as they are compact, plug and play, and easy to operate. They can be delivered in a small container ready to be put in operation. Maintenance is limited through automation and the use of highly durable components. The water quality is constantly observed, and remote monitoring and control is included for stress-free operation. Coastal communities, properties, resorts,
municipalities and industries can now get access to affordable, clean water for generations to come. Benefit from unlimited resources today and contact us for a free feasibility assessment. So with this desalination process, which comes in the both mode, the commercial format and the domestic also, very easily you can implement these plantets. Initially the problem was of the electricity, बहुत ज़्यादा electric consumption आता था, तो उससे अगर हम सोलर पावर से अगर इन प्लांट्स को जो कि स्मॉल स्केल में भी आते हैं और लार्ज स्केल में कमर्शियल में भी हैं, दोनों को अगर हम यूटिलाइज करें तो हम बहुत आसानी से रिवर्स ऑस्मोसिस और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू वी कैन गेट द clean and drinkable water from the sea water, and sea water can be utilized for the irrigation and for the different purposes also. No, but there are certain challenges in implementing the integrating the solar energy with India's agriculture sector. There are different problems in it, so we'll discuss one by one. Any question? Is there any question? Okay, so challenges and the opportunities are even there. The one of the biggest problem is of the land scarcity. The per capita land availability is very low in India. The land is already a scarce resource in India. With this, its demand ranging from farmers, industries, commercial service institutions, and the government. The dedication of land area near the substations for exclusive installation of the solar cell might have to compete with the other necessities that require the land. So, but there are now the techniques has been काफी techniques आ गए जिनमें हम ये इस चीज से भी को भी overcome कर सकते हैं और हम उस land को भी utilize कर सकते हैं. Next is the export driven market. The manufacturers are mostly focused on export market that buy solar cells and modules at a higher price, thereby increasing their profits. Many new suppliers have tied up with the foreign players in Europe and United States, thereby prioritizing export demand. They could result, जो PB हैं, the PBs are being imported from the different countries, and that's why the solar plates are जो है वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं. तो हम उसे इंडिया में ही प्रमोट करके नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू हम इसे भी ओवरकम कर सकते हैं. The biggest challenge for the solar sector is grid integration to the length and breadth of the country, followed by poor financial condition. The another point, absence of the waste management policy. Till now, the India doesn't have any solar waste management policy. अभी जो solar system के through जो waste होता है, जो waste है plates की और different items की, उसका हमारे पास अभी तक कोई proper plan नहीं है. So the solar waste is the electronic waste generated by discarded solar panel. It can be increased by at least 4 to 5 fold by the next decades. So another research topic for you people could be the best solar waste management system policy you can study. आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं because e-waste के ऊपर तो काफी काम हो रहा है and it is almost similar to the e-waste. You can implement, you can find out the ways how you can, the peoples can utilize or utilize those waste सोलर मटेरियल या सोलर वेस्ट को फिर से किस तरह से रीयूज कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं इफेक्टिवली. नेक्स्ट, कमर्शियल वायबिलिटी and utility. The solar energy production techniques is yet to be improved. It's like अभी आप लोग ने AI tools देखा होगा, ChatGPT, वो हमेशा लिखता है कि अभी हम development phase में है. So similarly, this solar technology, solar system technology still is under development. अभी भी उसमें बहुत सारे research work चल रहे हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है.
to utilize it in a commercial way. The topographically or climatically also, the sun rays are not uniformly available at any particular place throughout the year. पूरे ईयर पूरे एक जैसे सन रेजेस नहीं होते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन अभी अपन देखेंगे. वन सन वन ग्रिड सिस्टम किस तरह से अपन वन प्लेनेट सिस्टम किस तरह से गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट वर्क ऑन दैट, एंड इंडिया इज प्लेइंग a vital role in that particular project. That is also a new topic of the research for the researchers. Besides, the people, especially farmers in general, are yet to be educated. जो ये सोलर सिस्टम से जो बेनिफिट हैं, जो एडवांटेजेस हैं, how to implement them, how to maintain them, how to utilize them, where they can get the instruments are, ये सारी चीजें हमें अभी हमारे फार्मर्स को सिखानी होगी. And for that we'll have to play a vital role as an educational institution. आप एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पे ये हमारी आपकी हायर एजुकेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती कि हम अपने फार्मर्स को इन सारी टेक्नोलॉजी से, ये जो लेक्चर है ये आपको हो रहा है, सिमिलरली दिस शुड बी फॉर द फार्मर्स आल्सो. वी हैव टू ट्रेन आवर फार्मर्स. ट्रेडिशनल फार्मिंग से वील हैव टू स्विच. Of course, the farmers are implementing the new techniques, but sorry to say, बहुत सारी नई टेक्निक क्या है जो अनफेयर हैं, अनएथिकल हैं. वो टेक्नोलॉजी फटाफट से फार्मर्स इंप्लीमेंट कर लेते हैं, बट जो अच्छी टेक्नोलॉजी हैं जिनसे हम अच्छी क्रॉप, क्वालिटी ऑफ क्रॉप, जो सोसाइटी को हम एक क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं, उनके ऊपर वो काम नहीं करते. So that we have to educate them, क्योंकि वो जो अनएथिकल वेज हैं उनसे ज्यादा प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उतना ही ऑलमोस्ट प्रोडक्शन वी कैन गिव थ्रू दीज इम्प्लीमेंटिंग दीज टेक्नोलॉजी. तो हमें उनको एजुकेट करना होगा कि नहीं, वो तरीके से की अपेक्षा आप इस तरह से काम करें तो ज्यादा अच्छा तरीका होगा और हम सोसाइटी को अच्छा सर्व कर पाएंगे. Unlike the thermal power plants, the solar power is consumer dominated, and therefore the people's participation and acceptance are critical issue for its success. बहुत जरूरी है लोगों का पार्टिसिपेशन होना सोलर में. अभी भी जो घर में डोमेस्टिक सोलर, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक कहीं पर मैंने सोलर सिस्टम के ऊपर स्टडी की थी, तो मैंने देखा कि हम जो गवर्नमेंट हमें जो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है उसका रेट इज डिफरेंट, और जो अगर हम अपने घर पर सोलर सिस्टम लगते हैं और हम अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है सोलर एनर्जी उनको सेल करते हैं, तो वो बहुत कम रेट पर ले रहे हैं, बहुत अधिक. देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन द रेट ऑफ बाइंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड इन सेलिंग द इलेक्ट्रिसिटी. जो हमें दे रहे हैं उसके चार्जेस डिफरेंट हैं, जो हमसे ले रहे हैं उसके चार्जेस बहुत डिफरेंट है. तो ये कहीं पे हमें इसके ऊपर काम करना होगा, एंड यू रिसर्चर्स कैन वर्क ऑन इट. हम इसे कैसे इस डिफरेंस को स्टडी करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा. बहुत बड़ा डिफरेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट हमसे लेती है बाय हमारे जो डोमेस्टिक सोलर पैनल्स में लगाते हैं उनसे, और जो वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है, वो दोनों के रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है. The high initial cost, the initial cost of the solar irrigation system can be relatively high, making it difficult to implement by these farmers. Farmers के लिए हमें different scheme. अगर आप as a researcher अगर आप देखें कि ये जो benefits government हमें दिखाती है, तो बहुत ज़्यादा फायदे के मुझे नहीं लगते. हो सकता है कि वो ठीक हों, बट आप उनकी स्टडी करिए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. तो इसलिए आप इसके ऊपर काम करें और गवर्नमेंट को नए नए सजेशंस के साथ में आए. लिमिटेड एक्सेस ऑफ फाइनेंसिंग, बहुत कम फाइनेंसिंग एजेंसीज हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प करती हैं. सम ऑफ द फार्मर्स मे नॉट हैव access to the financing needed to purchase and install the solar irrigation system, and that is another biggest problem in implementing the solar system in the society and in agriculture or irrigation. Lack of technical expertise, जैसा मैंने आपसे कहा था कि we'll have to train the farmers. हमें farmers को train करना होगा, उनको कैसे उन्हें maintain करना है, किस तरह से buy करना है, कौन से पैनल्स ज्यादा अच्छे हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द पैनल्स,
comparative study of the technology, comparative study of the technical know-how of the instruments will have to demonstrate. हमें कहीं पर हमारे फार्मर्स को ये सारी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग देना होगी, and that training may not be an academic training but could be a practical training, जहाँ पर हम hands on training दें, but उनको academic training, theoretical training ना दें, हम hands on practice के द्वारा वो सारी trainings दें, कैसे how to operate the things, the instruments using the solar energy and the different devices. Limited awareness, मैंने फिर रिपीट करता हूं कि अभी भी इंडिया में जो अवेयरनेस है वो ग्रॉस रूट लेवल पर इसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है, एंड फॉर दैट वील हैव टू प्ले अ वाइटल रोल. हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज and the technical institutions like IITs and the engineering institution, they'll have to play a big role in creating the awareness about the solar system in India. हमें वो चीज़ों के ऊपर काम करना होगा और उसके लिए प्लान के साथ आना होगा. This could be another research work for you peoples, है ना, सारे टीचर्स के लिए. Climate and weather condition. Some regions have limited amount of sunlight or consistent clouds, which can affect the efficiency and productivity of the solar system. But वो अगर हम one grid system को implement करते हैं, हम ना करें one grid system पूरे उसके ऊपर ग्लोब के ऊपर, but हम one grid system we can establish in India itself. तो अगर हम ऐसा भी कुछ काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा. Another big challenge, हम जब 100% सोलर, ये ग्राफ से हम देखना चाहेंगे कि जब हम 100% सोलर एनर्जी सोलर पैनल से निकालते हैं तो एक्चुअल में हमें वो जाकर के ड्रॉप आउट के बाद हमें अप्रोक्सीमेटली 76.2% जो है वो एनर्जी मिल पाती है. उसका रीजन है द शेडिंग ऑफ द एनर्जी, डस्ट एंड डर्ट ऑफ द एनर्जी, रिफ्लेक्शन ऑफ द एनर्जी, स्पेक्ट्रल लॉसेस, irradiation and thermal losses, array mismatch, DC cable losses, inverter losses, AC cable losses. There are different kind of the dropouts of the power. Power dropouts हैं, बहुत सारे पावर ड्रॉपआउट्स हैं, जिसकी वजह से हम जितनी सोलर एनर्जी निकालते हैं उसका अप्रोक्सीमेटली 76% ही हमें मिल पाता है. तो ये भी एक रिसर्च का बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है कि हम इसे कैसे इंक्रीज करें. देयर इज अ बिग डिफरेंस. approximately 25% we are losing the energy. Dropout is there. इतना ड्रॉप आउट है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, और वो कहाँ कहाँ है इस ग्राफ के द्वारा मैंने आपको दिखाया. कैसे उसे आप कर सकते हैं, कैसे ये इसको कम से कम, जैसे मान लीजिए कि अगर अपन बात करें तो 7% शेडिंग लॉसेस जो हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं. कुछ लोग मैक्सिमम को के ऊपर काम कर सकते हैं, कुछ लोग मिनिमम लॉसेस के एसी केबल जो छोटे छोटे फिगर हैं जिनको बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं. लोग कॉस्ट कटिंग के लिए क्या करते हैं कि जो केबल है वो सब स्टैंडर्ड केबल यूज कर लेते हैं, उससे ड्रॉप आउट्स होते हैं. तो हमें इस तरह की अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करना होगी कि हम कॉस्ट कटिंग के लिए टोटल इम्प्लीमेंटेशन में कॉस्ट कटिंग के ऊपर ना जाएं. अगर हम बेटर क्वालिटी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो उसके एसेसरीज हैं उनको हम यूज करेंगे तो हमारा ये ड्रॉप आउट हम कम कर सकते हैं. एंड फॉर दैट वील हैव टू वर्क ऑन इट. The one of the biggest thing which is the creation of the PV panels, है ना, PV photovoltaic system, which actually generates the direct current DC, which an inverter then converts to the alternative current for home and grid uses. इसके ऊपर हम किस तरह से काम करें, ये पीवी पैनल्स कैसे हम इंडिया के अंदर और बढ़ा सकते हैं, इनके ऊपर इनका प्रोडक्शन, इनकी क्वालिटी कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमें काम करना होगा. वील हैव टू, मोस्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट as far as the PV panels are concerned. तो हमें इसके ऊपर काम करना होगा, इंडिया के अंदर उन्हें बनाना होगा जिससे कि हम
इंडिजिनस पीवी पैनल्स जो हैं, पीवी सेल्स बना सकें और हम अपनी कास्ट कटिंग कर सकें। नो, व्हाट इज द फ्यूचर अहेड? आगे हमारा फ्यूचर क्या है? कैसे एआई द सोलर एनर्जी और नेक्स्ट जनरेशन एग्रीकल्चर किस तरह का होगा, वो अपन उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। तो एक छोटे से वीडियो से देखें कि हाउ द सिस्टम्स, द एआई टेक्नोलॉजी एंड मशीन लर्निंग can be implemented in the modern agriculture and how the peoples are working on in the globe। बाहर कंट्री में लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं इस AI and ML टेक्नोलॉजी को, वो हमें इंडिया में भी उसके ऊपर काम करना होगा, उसके ऊपर वर्क करना होगा। Imagine a world where farming isn't just hard labor under the sun, but a high-tech operation driven by artificial intelligence. From robots planting seeds to algorithms predicting weather patterns, AI is revolutionizing the way we grow our food. And it's happening right now. With climate change, a growing global population, and shrinking farmland, traditional methods just aren't enough. The future of agriculture is smart, efficient, and sustainable, and it's powered by AI. So how exactly is AI feeding the future? Let's start with precision agriculture. This is where AI really shines. Imagine being able to monitor every inch of your field in real time, knowing exactly how much water. Now the peoples are talking about the precision agriculture. AI-driven systems are helping farmers analyze data from sensors, satellites, and drones to optimize crop growth. Instead of guessing, farmers now have detailed insights, allowing them to save water, reduce chemicals, and boost yields. And it doesn't stop there. Autonomous machinery is changing the game. Self-driving tractors, AI-powered drones, and even robotic harvesters are taking over the heavy lifting, literally. These machines, guided by AI, can work around the clock without human intervention. They plant, water, and harvest with extreme precision, reducing labor costs and increasing efficiency. The best part? AI doesn't just do the work, it learns from it. As these machines gather more data, they get better at farming, continually improving operations over time. But what about detecting problems before they even happen? That's where crop monitoring and disease detection come in. With AI-powered drones and satellite imagery, farmers can monitor their crops 24/7. These systems can spot early signs of pests, diseases, or nutrient deficiencies long before they're visible to the naked eye. Next up, predictive analytics. AI doesn't just help with real-time monitoring, it also helps farmers plan for the future. By analyzing weather patterns, soil conditions, and even market trends, AI can predict the best time to plant crops, the most profitable crops to grow, and even the likely impact of future weather events. This gives farmers the power to plan ahead and make smarter decisions, reducing risks and maximizing profits. But it's not just about efficiency. AI is making farming more sustainable. With the ability to precisely manage resources like water and fertilizer, AI is helping farmers reduce waste and minimize their environmental impact. As the world faces climate change and resource scarcity, sustainable farming is no longer optional, it's essential. AI is giving us the tools to grow more food with fewer resources, ensuring we can feed a growing population without depleting the planet. Of course, with any new technology, there are challenges. Not every farmer has access to AI-powered tools, and there are concerns about data privacy and ownership. But as AI continues to evolve, it's clear that it holds the key to solving some of the biggest challenges facing global agriculture. So what does the future look like? A world where farms are smarter, more efficient, and more sustainable. If you're as excited as we are about how AI is changing the future, don't forget to hit the like button and subscribe. So, देखा आप लोग ने वीडियो देखा ठीक से? जी सर। Yeah, so you can imagine how the people किस तरह से काम हो रहा है, कैसे लोग AI और ML को यूज करके ना केवल क्रॉप कटिंग से लेकर के क्रॉप मेंटेनेंस एंड फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द क्रॉप, एवरीथिंग इज monitored, controlled by these tools, and these tools can be operated using the solar energy. So it's in future everything will change. The future of the solar energy, that's why the future of the solar energy in agriculture looks promising as technology continues to advance
and cost continue to decrease. Here are some of the futuristic views. The incentive-based expansion policy. We'll have to create some incentive-based expansion policy, transforming from non-renewable energy-based system to renewable-based energy system, impose the several challenges. The renewable energy transition should be immediately implemented, but in very orderly way. एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें उसे इम्प्लीमेंट, अभी तुरंत होना चाहिए उसके ऊपर काम, बट एक ऑर्डरली वे में होना चाहिए. मस्ट बी बैकअप विद द इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसी to expand the solar network in the country. हमें ये बढ़ाने के लिए हमें सारी चीजें इंसेंटिव बेस्ड करनी होंगी. और इंसेंटिव क्या होगा? हम इनिशियली केवल वही इंसेंटिव दे सकते हैं. आप लोग के लिए कि मैंने एक टॉपिक छोड़ा हुआ है कि जो सोलर एनर्जी गवर्नमेंट जो हमें देती है इलेक्ट्रिसिटी और जो हमसे लेती है, उसकी प्राइस में कितना डिफरेंस है. अगर वो हम कम करें तो वही एक बहुत बड़ा इंसेंटिव हो सकता है. गवर्नमेंट इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों, हम किस लिए इतना ज्यादा डिफरेंस रखे हुए हैं? गवर्नमेंट को इसके ऊपर वर्क करना होगा और हम रिसर्चर्स को जो एकेडमिशियंस हैं उसके ऊपर काम करना होगा. एंड वील हैव टू गिव देम द सजेशंस फॉर दैट. The solar energy multi-potential candidate for the development. Solar energy is an attractive candidate to fulfill the electricity needs for not only for the domestic but the electric vehicles and the other systems like cooling system, heating requirement, and so on. There also we can utilize it. The better financing and training. हमें एक अच्छी हेल्दी फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा. प्राइवेटाइजेशन की जगह हमें गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज ऐसी लेकर के आनी होंगी कि हम लोगों को सोलार सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट द पीपल्स, फार्मर्स, पर्टिकुलरली फार्मर्स के लिए केवल हम एक ही सेगमेंट के लिए काम लेकर के आए कि हम फार्मर्स को किस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं और हम उनसे किस तरह से बेनिफिट निकाल सकते हैं, कैसे हमें बेनिफिट मिल सकता है. फॉर दैट विल हैव टू वर्क. अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं कॉस्ट कटिंग में, तो चलिए डोमेस्टिक में या कॉमर्शियल में आप इतना डिफरेंस प्राइस का रहने दीजिए, बट आप डोमेस्टिक यूजर्स और फार्मर्स को वो आप कुछ कम कर सकते हैं. we'll have to create जैसा मैंने बार बार कहा कि इंडिया में हमें अभी कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर बहुत काम करना होगा. There is a need to build the consumers awareness about the technology, the implementation of the technology, the maintenance of the technology. A solar musket for हर खेत में सौर ऊर्जा can be introduced in rural areas. हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं, डिफरेंट तरीके के हम होर्डिंग्स लगाएं, उनकी बेनिफिट्स होर्डिंग्स के द्वारा फार्मर्स को दें, वो उन तक पहुंचाएं, तो हम एक अच्छा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, सोलर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश कर सकते हैं. एंड फॉर दैट वील हैव टू वर्क. लिंकिंग द सोलर एनर्जी टारगेट विद द करंट मिशन. अभी हमारे कंट्री में वो कुछ बहुत स्मार्ट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लाइक मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन एंड डिजिटल इंडिया. हमें इन मिशंस को सोलर एनर्जी मिशन के साथ जोड़ना पड़ेगा. हम एक नया नाम कोई ये दे सकते हैं, दैट इज लाइक ग्रिड रेडी इंडिया. हम इस तरह से इन प्रोजेक्ट्स को इनके साथ में अगर हम इनकॉर्पोरेट कर दें तो भी हमें काफी सपोर्ट मिल सकता है. इफ दीज इनिशिएटिव्स आर एग्जीक्यूटेड as envisaged, it is only a matter before the India become one of the world's leader in solar energy. अगर हम इनमें सोलर एनर्जी को इम्प्लीमेंट कर दें, इन प्रोजेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट कर दें, हम इनके साथ इंटीग्रेशन करें, इरिगेशन के साथ में, एग्रीकल्चर के साथ, अगर हम इनको सबको क्लब करके इनको समराइज करें, एक प्रोजेक्ट जो एक दूसरे को सपोर्ट करें, उसके ऊपर काम करें. दो सम ऑफ द वर्क इज गोइंग ऑन इन द स्मार्ट सिटीज. द स्ट्रीट लाइट आप देखिए कि सोलर पैनल्स के द्वारा हम स्ट्रीट लाइट दे रहे हैं, तो उनसे हम
सोलर पैनल से स्ट्रीट लाइट भी जलाएं और बाकी के टाइम जो एक्स्ट्रा एनर्जी उन सोलर पैनल से बन रही है वो हम ग्रिड के ऊपर भी भेजें। तो उसके ऊपर अभी मेरे ख्याल से बहुत काम नहीं हो रहा है। हमने पैनल्स लगा लिए, कॉस्ट वही फिर है कि कॉस्ट कटिंग के लिए हमने छोटा पैनल लगा दिया जिससे एक लाइट जल रही। हम उस पैनल को थोड़ा सा पैसा बढ़ा के वो पैनल को बड़ा कर सकते हैं और उससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी डे टाइम में जनरेट होगी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट दिन में तो नहीं जल रही, तो उसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी जितनी उस लाइट के लिए जरूरत है उसे छोड़कर रिमेनिंग एनर्जी कैन बी ट्रांसफर टू द ग्रिड और हम अपने ग्रिड सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो दैट इज द ग्रिड रेडी सिस्टम। एग्रीकल्चर इन लाइन विद द सोलर production, there should be a combined agricultural use of land with the production of electric energy by the solar energy. It provides the solution for production of food crops at the same time the electricity generation under the consideration of soil protection and water savings. This can increase the sustainability of food, water, energy and climate the same time meeting the various sustainable development goal SDG जो sustainable SDG जो goals हैं हम उन्हें भी पा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के जो SDG हैं मेरे ख्याल से 27 या 32 SDG हैं उन्हें हम पा सकते हैं by implementing these things. Increase adoption as the cost of the solar technology, इनकी जो कॉस्ट है उसकी हम कॉस्ट कटिंग करें किसी तरह से और इरिगेशन ग्रीन हाउसेस को हम सपोर्ट करें, and that is the increased adaptation. The improvement in efficiency and reliability. Advances in the solar technology are likely to lead more efficient and reliable solar power system. उसके लिए हमें energy management system, solar energy management system implement करना होगा और उसके ऊपर वर्क करना होगा, which will further increase the attractiveness of the solar energy for the farmers. Greater integration with the other technologies, जैसा मैंने आपसे कहा, we'll have to integrate the data analytics, cloud computing, optimize the crop yield, to optimize the crop yields and reduce the water wastage. ये सारी चीजें हमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर, जो अभी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि नाउ द पीपल्स आर टॉकिंग अबाउट द प्रिसीजन एग्रीकल्चर, व्हाट इज इट, उसके ऊपर काम करना होगा। उसके ऊपर अपन कभी आगे किसी समय बात हुई तो अपन उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ग्रेटर यूज ऑफ ग्रिड एंड रिमोट एरियाज, ऑफ ग्रिड का कैसे हम रिमोट एरियाज में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जिससे हम वहां एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन कर सकें। बहुत रिमोट एरियाज में लोग बाग छोटे छोटे से लैंड के ऊपर काम करते हैं, उधर हम किस तरह से उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड एरियाज वेयर एक्सेस टू ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी इज लिमिटेड और नॉन एग्जिस्टेंट, वहां हम किस तरह से उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। इन दैट एरिया ऑल्सो वील हैव टू वर्क। बहुत सारे जो डेंस फॉरेस्ट हैं उनके बीच में छोटे छोटे से क्रॉप लैंड्स हैं, उन वहां लोग क्रॉप और एग्रीकल्चर करते हैं, वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां हम किस तरह से इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, किस तरह से हम दे सकते हैं उन्हें सपोर्ट, उसके ऊपर भी काम करना होगा। मोर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, हमें पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाना होगा। The government and private sector are likely to increase their investment in solar energy for agriculture as they see it as a sustainable and cost-effective solution. So we'll have to work on this public-private participation के ऊपर काम करना होगा। Resultantly, अगर हम sum up करना चाहें तो now we are working, India is playing a vital role in implementing a very promising project that is a one sun, one world, one grid project, OSOWOG. This will give the future of the solar energy in agriculture in India is very promising with fast technological advancement in era of AI and machine learning. This can consistently decrease the cost, leading to the greater adaptation and efficiency and integration of solar energy in agriculture. And for that,
दी गवर्नमेंट के जो बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें इंडिया, मैंने आपको जैसे बताया कि वाइटल रोल प्ले करता है, दैट इज द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड project. This is the one sun, one world, one grid. The Prime Minister, Shri Narendra, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi says the quotes that I firmly believe that this project can bring transformational benefit for the entire humanity. And this is the roadmap we have designed, the phase 1, phase 2, phase 3. We have to implement it. And these phases, क्योंकि सन जो है पूरे अर्थ पे 24/7 कहीं ना कहीं लाइट देता है, तो हमें अगर हम सिंगल ग्रिड बनाते हैं, अगर हम पूरे वर्ल्ड की एक सिंगल ग्रिड डेवलप करते हैं और जहां पर भी सन की रेजेस हैं वहां हम उसे एनर्जी को अगर हम स्टोर करते हैं या ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो हम पूरे वर्ल्ड को एनर्जी पावर दे सकते हैं. दिस इज अ वेरी futuristic project, the one sun, one world, one grid. And to implement that particular project, this is a plan of the government, this is the plan of the agencies, कि किस तरह से हम एक कॉरिडोर डेवलप करें. This black is an international corridor. Black line shows the international corridor, which will cover almost all over the world. The another green light shows the Africa region corridor. The another the violet जो है वो सेंट्रल एशिया रीजन कॉरिडोर बताता है, एंड द ब्लू शोज द साउथ एशिया रीजन कॉरिडोर. और इस तरह से एक प्रोजेक्ट है जो जिसके ऊपर सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, एंड दैट इज द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट. ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर अगर काम होता है आगे आने वाले समय में, तो हमें जो एनर्जी की प्रॉब्लम है वो हमारी एग्रीकल्चर को, डोमेस्टिक को, इंडस्ट्रीज को एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स मिलेगा, और हम अपनी फाइनेंसेस को, कंट्रीज जो हैं अपने एक बहुत बड़ा फाइनेंसेस जो हैं वो अपनी किसी दूसरे डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं. विद दिस I complete my the today's presentation. The references those I have collected mainly from the Press Information Bureau, and these are the some references जो मैंने दिए हैं साइट के. इनसे मैंने ये सारी चीजें जो आपको प्रेजेंटेशन है आज का प्रिपेयर किया. So these are the references जिनको आप आगे काम करने के लिए यूज कर सकते हैं. Now the forum is open for the question answers. किसी को कुछ पूछना हो, मेरे इस तरह के बहुत सारे प्रेजेंटेशंस हैं जो मेरे slideshare.net स्लाइड शेयर के ऊपर मैंने डाले हुए हैं. हालांकि ये वाला जो प्रेजेंटेशन है ये अभी स्लाइड शेयर पर नहीं है, इसे आज मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप सब लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं मेरे प्रेजेंटेशन को इस लिंक से. ये लिंक हम आपको चैट बॉक्स में भी आपको शेयर कर देते हैं, तो आप लोग, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इस लिंक को आप वहां से यूज करके मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स में ये शेयर कर देता हूं. तो आप लोग इस लिंक के थ्रू स्लाइड शेयर से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं. आई होप आप सबको मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. मेरी एक कोशिश थी, मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया था, बट चूंकि ये मेरे गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था इसलिए मैंने इसके ऊपर काम किया और ये प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए तैयार किया. आई होप आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी या नई बातें आपको समझ में आई होंगी. तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली. आई एम थैंकफुल. मैं देख रहा हूँ चंद्रलता मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू चंद्रलता मैम. सभी के थैंक यू सर. थैंक यू वेरी वेल सर. इट वाज सो नाइस टू सी यू. सर आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और वीडियोस से और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन हुआ सर. थैंक यू मैम. आप तो मेरी तारीफ करेंगी क्योंकि आप हमारी कलीग रही हैं, तो आप हमारी नहीं कर रहे हैं सर. बाकी पार्टिसिपेंट्स लगेगा. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. Yes, it's to the organizers. Yeah.
Lokesh sir. Yes. Any question from any side? लोकेश सर, मुझे यही कहना है, डॉक्टर पाठक सर बहुत अच्छा लेक्चर रहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि आपने एकदम एकेडमिकली तो बहुत ही बढ़िया रहा, लेकिन आपने दिल से, यानी देश प्रेम भी उसमें झलकता था। ये बात मुख्य तौर से आप में को मुझे बतानी है। Thank you, sir. Thank you. Any question from any side, any part from any participants? Sir, may I? Yes, yes. Ma'am. Good afternoon, sir. Sir, just like our government invests in power stations like hydropower station or thermal power station run on coal, does our government invest in solar power plants? Yeah, the government is planning, government is working on that, and they are establishing their solar power plant. But abhi jo government की technique है, it's more on the public. ऐसा Yes. कोशिश करें जितना भी ग्रिड्स में जो कलेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो दे आर डिपेंडेंट। उनकी जो अभी की पॉलिसीज हैं वो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पब्लिक डिपेंडेंट ज्यादा है, लोगों के घर में मैक्सिमम सोलर पैनल्स लगाना। जितना आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट उतने अच्छे सोलर पैनल्स एस्टेब्लिश नहीं करी ऑन द गवर्नमेंट लेवल, जो कि होना चाहिए। सर, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। सर, नेट जीरो का जो लक्ष्य है वो 2070 तक हम पूरा करेंगे, ऐसा मैंने सुना है। क्या यह जल्दी नहीं हो सकता? क्या इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, दे आर वर्किंग ऑन टू इम्प्लीमेंट टू गेट इट ऑन 2030 सर। अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू गेट इट कंप्लीटेड बाय 2030। उससे पहले करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर। अगर सर ये प्रोजेक्ट जो वन सन वन अर्थ और वन ग्रिड जो प्रोजेक्ट है, अगर ये पार्शियली भी इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत बड़ा काम होगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लीडिंग इन दिस पार्ट, तो मेरा यहाँ पर सजेशन ये है कि अगर हम इसे पूरे वर्ल्ड पर ना लेकर के अगर हम स्टेट वाइज अभी चालू करें, डिफरेंट स्टेट में, कि मध्य प्रदेश में हम वन ग्रिड सिस्टम को बनाएं, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में बनाएं, और सारी ग्रिड को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमको ज्यादा, हम कम से कम कंट्री के अंदर तो वो इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो एक मेजर प्रोजेक्ट की जगह अगर हम उसको पार्शियल में करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ज्यादा अच्छा होगा। दिस इज माय सजेशन, मेरा और कुछ नहीं। Any other question? Okay, if you don't have any questions, so it's over to the Lokesh sir. Lokesh sir, I hope मेरा सेशन ठीक लगा होगा, और मैंने सर से भी रिक्वेस्ट की थी, यशवंत सर से भी, कि थोड़ी देर को आप सेशन में आए, पता नहीं आए कि नहीं, I don't know. Thank you so much, sir. Thank you so much for enlightening us with the topic integrating solar energy and agriculture. And I hope all the participants get more than enough from you, and they will implement your knowledge obviously in their practical life, or for doing any business, or in their academic era. So thank you so much, sir. Thank you so much for enlightening us. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks to all the participants. So, B, stay here. I'm to our next resource person.